So hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. In this session I will discuss daily Hindu news analysis. I am Dinesh Kumar and I am former assistant professor of law at Campus Law Center Law Faculty, Delhi University, and presently I am working as an academic head of Manolo classes. So dear students, in today's session I will discuss with you the important news from your examination point of view. This first news is relevant just for your general information, not relevant from the examination point of view. States can ease COVID curb centers. So basically in this news, center has given direction to the state that if they want to reduce the restrictions regarding the COVID, then they can reduce the restrictions, ताकि जो हमारे देश की इकोनॉमी है और जो हमारे देश की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो लागू हो सकें. सो दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन एंड यू नीड नॉट टू बी मोर फोकस्ड अपॉन दिस. All these are political news, not so important. Now this is for your general information. Free NEET JEE coaching for government school children. So the Delhi government has taken the decision to provide 6,000 students who will be selected in this year, and they will be provided free coaching of NEET and JEE entrance examination. So if anybody wants to get the benefit, then they may apply. Now we come to next. Now we come to this news. Our bull race is not violent as Jallikattu, AP villagers. So this term Jallikattu is very important from your examination point of view. So basically Jallikattu is a game which is played in the southern state of our country, and the constitutional validity of this game was challenged before Honorable Supreme Court, that this game involves cruelty to the animals. ये जो जल्लीकट्टू गेम है, इस गेम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस गेम में जो जानवर्स होते हैं, जो हमारे ये होते हैं ऑक्स वगैरह, जो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. सो बेसिकली वी आर हैविंग इन अवर कंट्री वन लॉ, that is prevention of cruelty against animal act. We are having a law prevention of cruelty against animal act. So इस जल्लीकट्टू के गेम में क्या होता था कि जो हमारे बुल्स होते हैं उनके साथ क्रुएलिटी की जाती थी, तो इसलिए इस गेम को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टाइम के लिए बैन लगाया था. सो नाउ द सिमिलर गेम्स आर प्लेड इन दीज विलेजर्स, आंध्र प्रदेश के गाँवों में. सो नाउ द विलेजर्स आर सेइंग दैट आवर बुल रेस आर नॉट वायलेंट एज जल्लीकट्टू. तो हमारे जो बुल की रेस है वो जल्लीकट्टू की तरह वायलेंट नहीं है. मीन्स कि इसमें देर इज़ नो क्रुएलिटी इन्वॉल्व अगेंस्ट द एनिमल्स. सो दिस टर्म Jallikattu is very important for you and you must be aware about this game. So you may get a passage from this Jallikattu. This is very important. Many times the examiner has asked this question even in the UPSC examination. So please be careful about this Jallikattu. Now we come to the most important news, and that is the editorial. A case for more federal judiciary. So this is very important from your examination point of view, and all of you may get a passage based upon this editorial. So अब हम समझते हैं a case for a more federal judiciary means हमारे देश में जो judiciary है that should be more federal. अब पहले हम समझते हैं कि what is the meaning of term federal. So federal means where the powers are equally divided. Federal means where the powers are equally divided between the various between the center and the state. So this is with respect to the federalism.
but here I will discuss only the federal part with respect to the judiciary. तो यहाँ हम जो स्टेट की और सेंट्रल की फेडरल पावर हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, इन आवर कंट्री कोर्ट्स आर फाउंड एट 4 लेवल। सो एपेक्स कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, below it we have high court, and then we have the this district courts, and then we have the various lower courts. So in this editorial, author is emphasizing that our judiciary is more centric. More centric means we are having one court at all India level, and that is the Honorable Supreme Court. हमारे देश में एक कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर ऑथर का कंसर्न ये है कि मोस्ट ऑफ द पावर्स आर लाइज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दीज पावर्स आर डू नॉट लाई विद द हाई कोर्ट। सो यहाँ पर इट मीन्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट द सेंटर, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हाई कोर्ट जो है इट रिप्रेजेंट द स्टेट। तो दिस ऑथर हैज गिवन वेरियस एग्जांपल्स. For example, in the case of SLP, SLP means special leave petition. It has been provided under Article 136 of Constitution of India. So, in this case, the decision of any court can be challenged before Honorable Supreme Court directly. तो SLP के मामले में डायरेक्टली जो डिसीजन है किसी भी कोर्ट का वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. इट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस विल वायलेट और विल बाईपास द हाई कोर्ट और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. तो इससे क्या होता है, इफ वी गिव द लेस पावर टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, then it affects the federal structure of judicial system in our country. So this is the first example. If we take the second example is PIL. PIL means public interest litigation. So mostly the PIL are filed in Honorable Supreme Court directly. So it also bypass the jurisdiction of the Honorable High Courts. So it also affects the federal structure of judiciary in our country. So in the cases of PIL, any person can directly approach to Honorable Supreme Court. Third is the creation of various tribunals. Various tribunal means like administrative tribunal and the company law tribunal. So NGT, National Green Tribunal. So what happens generally in these cases? So tribals are also having their appellate body. सो अगर हम बात करें कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, सो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और इसकी एपलेट बॉडी क्या है, एपीलेट कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. सो इफ एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, देन दैट पार्टी कैन अप्रोच टू द एपीलेट बॉडी ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. सो इफ द पार्टी इज फर्दर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल, देन द मैटर विल डायरेक्टली गो टू द Honorable Supreme Court. So here it means that here the jurisdiction of Honorable High Court has been bypassed. So this is the concern of this author in this editorial, that we should also give more powers to the Honorable High Court and which are similar in the comparison to Honorable Supreme Court, because Honorable High Court represents the state judiciary, and if we will give the less power to the Honorable High Court, then it will affect the federal structure of judicial system in our country. So this is very important and all of you must read it. Now this understanding the Haridwar conclave. So this news is a political in nature, but one term has been used in this news that is of your importance. The word is genocide. So genocide का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को एक मास लेवल पर मारा जाता है, देन इट इज नोन एज अ जीनोसाइड. सो यहाँ पर जो ऑथर है, शी हैज एक्सप्रेस्ड हर व्यू दैट देयर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल वायलेंस इन आवर कंट्री, मीन्स इंडिया, एंड शी हैज गिवन द इंडिकेशन ऑफ दैट.
So you need not to go into this news, but you should read something about the genocide. So this genocide term is very important from your examination point of view, and it has been asked previously as well. So the term genocide is important from legal point of view as well as GS point of view. Rest of the news is not relevant. Now we come to the pause delimitation exercise. So this news is also important. So here this news delimitation exercise or regarding this Jammu and Kashmir may not be relevant, but the term used in this delimitation commission or delimitation exercise is very important. So first of all we will understand the meaning of term delimitation commission. So basically क्या होता है, our country or our state is divided into various constituencies. So suppose it is a state, like this is a state of Jammu and Kashmir, and suppose this has been divided into various constituencies. This has been divided into various constituencies. So basically what happens, there is a delimitation commission in our law, and this power has the right to change the or alter the boundary area of a particular constituency. So delimitation commission के पास ये पावर होती है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया को कम ज़्यादा कर सकता है या उसके एरिया को थोड़ा शिफ्ट कर सकता है. So for example, suppose this area 1 and this is area 2. So delimitation commission has the power that it can increase this area or it can decrease this area. So here you should know something about the delimitation commission. This is important from your GS point of view. Now we come to the next news. It says the India lacks solar waste handling policy. So basically we are approaching to have the more solar energy in our country. So why we want to have the more solar energy? We want to have the more solar energy to reduce the pollution and to reduce the dependency upon the other source of energy like electricity. So अभी जब हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे देश में जो कोयला है वो काफ़ी कम हो गया है, और हमारे देश में काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, जनरेशन होता है या प्रोडक्शन जो होता है, दैट इज़ मोर बेस्ड अपॉन कोल प्लांट्स. तो कोयला से ज़्यादा होता है, तो उसमें हमको ज़्यादा कोयला की आवश्यकता पड़ती है. जब कोयला बर्न होता है, इट आल्सो कॉजेज द एनवायरमेंट पॉल्यूशन. सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट वी आर मूविंग टू दिस सोलर पैनल for the generation of electricity or generation of light, but we are not having any effective solar waste handling policy. So this is the concern of this author in this news, that India should have a very good solar waste policy. So that is important from your examination point of view. You may get a passage in it. Now we come to the general news. हेलमेट मस्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर 4. तो एक नया कानून को अप्रूव कर दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज अ चेंज इन द मोटर व्हीकल रूल्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स दैट नाउ it will be mandatory for the children below the age of under the age of 4 years to have the helmet on their head. This is necessary for their own safety, so you should be aware about it. These news are general and not so important from your examination point of view. Now we come to this news. First woman reported cured of HIV after stem cell transplant. तो ये इस न्यूज़ ये कहती है कि दिस इज न्यूज़ रिलेटिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये कहता है कि द फर्स्ट वोमेन रिपोर्टेड क्यूर्ड मीन्स एक फर्स्ट वोमेन है कंट्री मतलब वर्ल्ड में जिनका जो क्योर हुआ है HIV ट्रीटमेंट का, HIV डिजीज़ का, it has been taken place through the stem cell transplant. तो ये फर्स्ट अपने तरह का एक पहली न्यूज़ है जिसमें कि HIV जैसी डिजीज़ को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के द्वारा क्योर किया गया है. जस्ट दिस इंफॉर्मेशन में बी आस्क्ड इन योर MCQ टाइप एग्जामिनेशन. Rest of the news are not important from your examination point of view.
these are not important. So that's all for today, my dear students. I will come again with the daily Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.